Hello and welcome. Good evening to each one of you. Welcome after a week's break, right? Last Saturday I had to miss you out. I was engaged in some other work. And of course, a lot has happened, right? So let's talk about what has happened within this week. We saw a complete bearish week. We could see market opened Monday gap down, and from there it took a straight nosedive towards south. It closed at Nifty closed at 15,293, right? And the kind of down move we saw after a long period of time, right? And if you see from the all-time high of 18,604, Nifty is down by 3,311 points. That's roughly 18%, right? And अगर मैं opposite side से बात करूँ इसकी तो Nifty has got almost now 22% upside to reach previous high of Nifty, right? That is 18,600. So roughly it's an opportunity for the people who look glass at half full. For those who are having a different mindset, they may say the glass is half empty, right? So 22% is a good upside from this point. Whether the market will reverse from here or not is a question mark, $1 million question mark. We'll look at it कि उसको कैसे explore करें. But let's look at the statistics. If you look at Bank Nifty is at 32,743. That's roughly 9,088 point down from the previous high of 41,830. If you look from the upside down, it's almost 22% down. But if you see from where Bank Nifty is standing, it is having 28% upside, friends, right? Now, if you look at a Bank Nifty chart, I found one thing very interesting, okay, which I would like to share with you. And for that, I might have to go to a monthly chart on a Bank Nifty. Let me share the chart with you before I forget that. Right? So that's a Bank Nifty chart, a monthly chart, right? If you look at Bank Nifty is exactly taking a support at where it was way back in 2019 on 12th month, right? So pre-COVID level, दिसंबर में जहां पे बैंक निफ्टी खड़ा था 32,600 के आसपास में था, अभी 32,743 में है. So you can say लौट के बुद्धू घर को आए, right? So it's almost now almost 2.5 years since then, and within 2.5 years, Bank Nifty has reached where it started in December 2019. Again, there is a lot of significance if you look at this chart and then think logically whether in last 2.5 years quality of bank assets have improved, NPA reduce हुए क्या banks ने value add किया marketplace में? If yes, then Bank Nifty deserves to go up, and if it hasn't done any great, then definitely it needs to go down. So यहाँ से अगर मैं सारे banking sector को देखता हूँ तो lot of reforms we saw, NPAs कम हो गए, despite going through the COVID time, we are doing much better in terms of banks. NPAs कम हो गए, asset quality improvement हो गई है, right? इनकी revenues की growth हुई है, profit की growth हुई है. So कुल मिला के अगर मैं इस chart को देखता हूँ Bank Nifty के, तो it clearly says now it is available at a very good price, right? Again, should we enter or not is a question mark. But is it a value now? Yes, sounds to be reasonably valued at this point of time as far as Bank Nifty is concerned. क्या निफ्टी भी वैल्यू मतलब एक अच्छी वैल्यू पे अवेलेबल है? अगर निफ्टी पी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो निफ्टी पी is somewhere around at 19 now. We generally say 16 to 19, 20 is a very good investing time if you talk about only Nifty price earning ratio wise. Of course, there are other criteria as well. GDP के हिसाब से, right? We might be at around 102%
So that criteria is showing Nifty is expensive at this point of time, and it may require some more correction. Again, it's another criteria. But now if I look from bank Nifty's perspective, तो वापस बैंक्स में जो अंडरवैल्यूड बैंक हो गए वहां पे एक स्टैगर्ड मैनर में परचेज करने की अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई देती है यहाँ पे, राइट? एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड पर्सनली डूइंग दैट इन अ स्टैगर्ड मैनर. लमसम नहीं इन्वेस्ट करना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. Now let's look at the other data points. Other data points are, अगर मैं पिछले क्वार्टर के रिजल्ट की बात करूं, एडवांस टैक्स की बात करूं, जीएसटी की बात करूं, तो we have been doing very well. And इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूं तो it's quite satisfactory. Different agencies will be giving different kind of forecasts, but on an average we are doing well on that front. And अगर मैं मानसून की बात करूं, those of you who are in or around Mumbai, you would have already started experiencing the monsoon is very much around, right? And now let's talk about the fear gauge, right? India VIX. India VIX has shot up on Friday. In fact, on Thursday and Friday put together, almost 15% India VIX बढ़ा है. That means fear बढ़ा है market में. It used to be 19.57, where from it has jumped to 22.75. So generally आज की डेट में अगर हम स्टेबल इंडिया वीक्स की बात करते हैं तो 16-17-18 के आसपास में रहता है, बट इट इज नाउ ऑलरेडी 22.75. प्रीमियम्स although have not increased. ऑप्शंस प्रीमियम्स उतनी बड़ी नहीं जितनी की इंडिया वीक्स बढ़ा है, राइट? सो अगर हम बात करें SGX निफ्टी की, which is at 15,293, while as Nifty future at NSE was trading on Friday end of the day at 15,305. So more or less Monday, if nothing goes wrong worldwide, we'll be expecting a flat opening for Nifty, right? RBI ने as of now कोई नया झटका नहीं दिया है. अगर हम नेगेटिव साइड में देखें तो लास्ट जो 40 बेसिक पॉइंट उन्होंने बढ़ाए थे इंटरेस्ट रेट, that was only shocker, but RBI has also said they will not be giving a new shocker in a running commentary basis, right? If you look at markets, they've been having a downtrend. US markets have already fallen down more than 22%. That means they have already gone into bear territory. But अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी is still down by 18%, right? So Nifty has not gone into bear territory yet, but of course Bank Nifty 22% down hai. So by criteria of fall beyond 20%, we say it has gone to bearish territory. So Bank Nifty has entered into bearish territory. Of course, they are trading below 50 days moving average, below 100 days moving average, below 200 days. बहुत सारे moving जो major moving averages है वो तोड़ दिए. But that can also be seen a good opportunity to start accumulating in a staggered manner, right? Of course, US market की भी वही हाल है. और आप S&P 500 का इंडेक्स देख लो या डव का इंडेक्स देख लो, नैस्डैक का इंडेक्स देख, सबकी लंका लगी पड़ी है, right? And of course, रशियन एंड यूक्रेन वॉर चल रहा है, 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, और उसका इम्पैक्ट जो झेलना पड़ रहा है, दुनिया को झेलना पड़ रहा है. वी आर still fortunate that the oil price, despite being last week at $120 per barrel, we are getting a discounted Russian oil, although it's not as good quality as the Middle Eastern oil is there. रिफाइन करने में थोड़ा इसको ज्यादा मेहनत लगती है, एक्सपेंसिव जाता है रिफाइन करना, बट मरता क्या न करता, राइट? तो in the international market, the crude price has fallen from $120 last week to now $113, which was on today, right? So थोड़ा बहुत 5-6% की गिरावट हमने यहाँ पे देखी. Although the gold price है, generally जब मार्केट नीचे जा रही होती तो गोल्ड प्राइसेस अक्सर ऊपर जाते हैं, राइट? गोल्ड इज सपोज्ड टू बी अ सेफ हेवन, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा. गोल्ड प्राइसेस अराउंड 52,500 के आसपास में स्टेबल है. सो that gives an indication that the market may have bottomed out, or they are very close to the bottom. So keep your fingers crossed and be ready with a cash to and cash on the opportunity, right?
Now, what had happened last week, Fed chair Jerome Powell increased the interest rate by 75 basic points in US, and that's the highest, increase in interest rate in a decade. So again, it seems that they are in panic to control the inflation, which is almost now 40 years high. So that's a historically high for US, and that's creating a panic in US market. And obviously वो कहते हैं ना, अगर अमेरिका में बुखार आता है लोग को, तो फिर वो उसका एशिया में एटलीस्ट सर्दी जुकाम तो लग ही जाती है. So that's what our markets are also feeling, that pain, and they are following up the same way. कमोडिटीज के प्राइसेस काफी हद तक बढ़े हैं. अगर आप बात करें, चाइना का लॉकडाउन ओपन होने से ऑयल कंजम्पशन की एक्सपेक्टेशन बढ़ी थी, जिसकी वजह से ऑयल बढ़ा था. बट एट द सेम टाइम अगर चाइना के लॉकडाउन खुलते हैं तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज वुड हैपन मोर, एंड कमोडिटीज के प्राइस थोड़ा डाउन हो सकते हैं. एंड दैट्स मैटर ऑफ कंसर्न, राइट? Commodities as of now, if you see the wholesale inflation, that's in 2 digit, although retail inflation is in a single digit as of now, which is contained. But जो business to business inflation है, business to business की purchasing में inflation है, that cannot be absorbed by the businesses, right? So sooner or later they have to pass it on to the people who are buying their services and goods. So that is again a big matter of concern. So looking at the pros and cons with respect to markets, the cons are looking a little more heavier at this point of time, while as the pros are little lighter. Although in Indian context, I still find that pros are heavier than consequences. But yet markets are reacting to the US market, and as long as there is a downside in US market, we may follow the same pattern, right? So that's the market, and you can expect a little further downside once this at this level of 15,300 के लेवल पे जो कंसोलिडेशन होना है, वो होने के बाद में मार्केट शायद थोड़ा और downside देख सकते हैं, unless and until US markets start picking up, right? So Nifty और Bank Nifty का जो चार्ट है थोड़ा pains giving तो लग रहा है, right? So take care of that aspect, and लमसम में पैसा न डालें, staggered manner में थोड़ा थोड़ा करके आपके जो भी fundamentally strong companies हैं, आप उनमें इन्वेस्टमेंट करना भी बंद न करें, क्योंकि market may not keep on giving you the opportunities, right? Who knew during March 2020 that 7,511 will be the lowest point, and the market will turn from there. That time, if you talk to the experts, there were people who were talking about Nifty touching even 3,800, 4,000, right? So was that true? No, it wasn't true. So nobody knows when the bottom will be made. But at the same time, as an investor, staggered manner में थोड़ा खरीदते रहेंगे तो अपने पास में थोड़ा कैश भी रहना चाहिए और थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी होते रहना चाहिए. Market sooner or later will turn around, and they will march on towards 18,000, 19,000, 20,000. That's the basic nature of markets, right? किसी भी country के market हो. So with that, I'll start taking up your questions, friend. Let me take question from Nikhil Parmar, right? Nikhil, एक minute दीजिए. Let me look at the fundamentals of Dixon. Okay, so recently I have started following Dixon Technologies. I have not taken any entry so far, but we've been watching it. Watch list में हमारे Dixon Technologies आ गया. Last time 3,300 के आसपास में कहीं ट्रेड कर रहा था. Let me see what is the impact of the downside last week, right? Almost एक हफ्ते में कुछ न कुछ तो करेक्शन आई होगी यहाँ पे. So देखते हैं हमने जो लेवल चूज किया था, whether वहाँ पे ये पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है. So
Here is Dixon Technology for you friends. So Dixon Technology ने ना दो हेड एंड शोल्डर टाइप के पैटर्न बनाए हैं, एक लार्ज है और एक इधर छोटा सा है। जो छोटा सा हेड एंड शोल्डर ये बनाया था, इसका तो मोरलेस टारगेट यहाँ पे पूरा हो गया है, बट नाउ इट इज कंसोलिडेटिंग at this particular level 3360 only. If you look at the current market conditions, you know, it might go further down and consolidate somewhere around 2875 or 2800 के आसपास में पकड़ लो इसको, राइट? सो 2700 2800 के आसपास में अगर ये कंसोलिडेशन करना चालू करता है तो दैट कुड बी one moment for you know, me to start buying it in staggered manner. It may fall further. Next target बहुत डाउन साइड में अगर मार्केट में गिरावट बनी रही तो you would see it is you know, going down side, right? तो ओवरऑल स्टॉक का जो वैल्यूएशन है काफी महंगा है। अगर आप वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, बुक वैल्यू 168 रुपीस की, वाले द प्राइस इज you know 3360 times, that's quite expensive. बाकी in term of ROC, ROE and other parameters it is good, although free cash flow बहुत कमजोर है इसका। फेयर वैल्यू पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो अराउंड 1200-1300 रुपए की इसकी फेयर वैल्यू है एंड इट्स ऑलरेडी way beyond it. It's a momentum stock. If you believe that the electronic industry will keep on growing in India, and Dixon is placed very nicely, making, you know, OEM for lot many international brands. But at the same time, if you look at this curve, this had seen a steep rise from you know, COVID time पे 700 रुपए के आसपास में ये ट्रेड कर रहा था. That was a fairly good price, but now थोड़ा एक्सपेंसिव है. सो मेरे ख्याल से निखिल, अनलेस अंटिल शॉर्ट टर्म में आप वेट करें. मेरे ख्याल से एंट्री अभी इमीडिएट नल है. आई डू नॉट नो अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ money or you know, capital you want to allocate to Dixon Technologies, but at this point of time मेरे ख्याल से थोड़ा महंगा है. थोड़ा और वेट करिए, मार्केट को देखिए. If you are taking any undervalued stock at this point of time, it is advisable in buying in a staggered manner. But if you are planning to buy any expensive stock which may be fundamentally good yet expensive, I would say wait, क्योंकि जब भी मार्केट गिरती है तो गिरती हुई मार्केट में जो महंगे स्टॉक है वो सबसे पहले गिरते हैं. So that you need to keep in your mind, right? Let's take another question from Shruti Singh. Good evening, Shruti. Your view on Mahindra Lifespace developer. Mahindra Lifespace, let's see. हमने last 2-3 हफ्ते पहले देखा था इसको. Mahindra Lifespace. ठीक है. So it's a trading almost at more than 3.5 times at this point of time. सी यहाँ पे ना अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे या रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा. ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये माइनस में चल रहे हैं, P86 का है, प्रॉफिट माइनस में चल रहा है, 5 साल का भी 10 साल का, सेल्स ग्रोथ माइनस में है, प्रोमोटर खुद बेच के जा रहे हैं. देखो 0.01% प्रोमोटर ने यहाँ पे बेचा है. कुल मिला के अगर मैं देखूं पीजी रेशियो माइनस में, अगर मैं फेयर वैल्यू भी स्टॉक की निकालूंगा तो मेरे ख्याल से 125-150 के ऊपर की इसकी फेयर वैल्यू आएगी नहीं. सो कुल मिला के स्मॉल कैप कंपनी है. रियल एस्टेट कंपनी में बहुत सारे जो ऑर्डर बुकिंग होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, वो कंटिन्यूअस लेवल पे नहीं होती. कभी भी वहां पे ऑर्डर बुकिंग आ जाती है और बैलेंस शीट्स उतने अच्छे से समझ में नहीं आती. सो आई वुड से avoid this stock at this point of time. There are better opportunities in the same space, in the same sector, right? So look for them. नेहा जी का सवाल है, Gabriel India seems to be a good investment. Gabriel India, I think हमने ये Gabriel India कुछ हफ्ते पहले हमने ये देखा था. So it's a part of Anand Group and it is you know, single product company. Now single product company ऑफ कोर्स चैलेंज है, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट ही नहीं चला तो क्या करेगी, राइट? ऑल्टरनेट है नहीं इनके पास में प्रोडक्ट का. बट द प्रोडक्ट दे मेक, व्हिच इज आई थिंक अ सस्पेंशन, राइट? दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन एवरी व्हीकल, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे वो यू नो
योर डीजल व्हीकल हो, किसी भी टाइप का व्हीकल होगा, शॉक एब्जॉर्बर तो उसमें लगने ही लगने हैं। सो हो सकता है डीजल व्हीकल की कमी हो जाए, लेकिन व्हीकल की कमी नहीं होनी इंडिया में, राइट? सो उस हिसाब से ये एवरग्रीन प्रोडक्ट है और इनकी मास्टरी है वो प्रोडक्ट में। ना प्राइस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं 53 का, सो इट्स 2.5 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, विच इज फेयरली गुड प्राइस फॉर दिस कंपनी। आरओसी आरओई बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग तो नहीं है, बट ठीक ठाक है, अच्छे हैं। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑलमोस्ट 17.5%। अगर आप स्टॉक पी की बात करें तो ऑलरेडी इट्स 19.4, वाइल एज इंडस्ट्री जो कि ऑटोमोबाइल एंसिलरीज की इंडस्ट्री का जो पी है, क्यूमुलेटिव पी, वो 20 का है। सो मोर और लेस ये अपने इंडस्ट्री के पी पे ट्रेड हो रहा है, तो यू कैन से इट्स नॉट अंडरवैल्यूड। If you talk from the fair value perspective, the fair value perspective is around 125, 130 के आसपास की इसकी fair value है. So it's roughly trading, almost 30 rupees below the fair value. So ठीक है, 12-15% undervalued है, so that is not a bad idea. But again, staggered manner में खरीदना चालू कर सकते हैं, और even if on a further fall, it can be taken more. I think 100 rupees तक accumulate किया जा सकता है ये स्टॉक को, with a target of 150. The time frame could be 6 months to 1 year, right? So that would be my advice on this stock, Gabriel India. I have started accumulating it for last 10 days. So that's a disclaimer. Again, whatever I'm sharing here is being shared for educational purpose, right? It's not an advice to enter. The stock market is a risky business, and it should only be done by the people who understand the risk involved and they know how to mitigate the risk involved in this business. How you can mitigate the risk in this business is by hedging your portfolios. Again, make good success and profit in this market. Okay. So next question है Mr. Roshan Harish का, share fundamentals of Akshar Chem. Can I buy for 3-year time? Akshar Chem India, right? So Roshan, I have also not gone through this company, so let me study it along with you. Okay. Vinyl sulfone, according to 45% share of the country's export and one of the world's largest CPC, green pigment manufacturer, with a global market share of 10%. Looks impressive. One of the fastest growing vinyl sulfone manufacturer in India, promoted by Mrs. Paru M. J. Krishna, with a vast experience in nearly 3 decades in the chemical industry, mainly dye intermediaries and pigments. Chairperson and MD, and Mr. Munjal J. Krishna, joint MD and CEO. All right. So as far as the profile seems to be good. Sector seems to be a growing sector. There's no issue with the sector. Now Mrs. Paru and Mr. Paru, दोनों का बैकग्राउंड चेक करना आपकी जिम्मेदारी। मैनेजमेंट कैसा है हमेशा ये देखने की जरूरत है। थोड़ा भी मैनेजमेंट में अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू है, यू शुड नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन दैट, राइट? सो ये रहा उसका मैनेजमेंट का एक एस्पेक्ट है, बहुत एक्सप्लोर करना पड़ता है वो एस्पेक्ट को। एज ऑफ नाउ ठीक ठाक लग रहा है, एक्सेप्ट द बैकग्राउंड ऑफ rather the integrity of Mrs. Paru and Mr. Paru. So ये आप चेक कर लेना खुद, Mr. Roshan. Second, अगर मैं डेटा पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ तो इस क्या बोलेंगे, बेबी मार्केट कैप है, 211 करोड़ की कंपनी है। अगर आरओसी आरओई देखेंगे तो इट्स लेस देन 6, नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग, ऑल्दो बुक वैल्यू 348 की एंड इट्स अवेलेबल एट 262। सो बुक वैल्यू के पर्सपेक्टिव में अंडर वैल्यूड लगता है, बट दूसरे पैरामीटर भी जरा क्विकली कवर करते हैं। डिविडेंड देता है 1.33, फेस वैल्यू 10 की है, स्प्लिट नहीं हुआ है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.18 है, एक्सेप्टेबल है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10.7, तो काफी कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये कंपनी के. नॉट एन एक्सेप्टेबल बिट टू मी ऑन दिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. नाउ अगर हम सेल्स फिगर देखते हैं, 5 साल की प्रॉफिट माइनस में है, 10 साल की प्रॉफिट 20%, 10 साल की सेल्स 22%, दैट सीम्स टू बी गुड, बट 5 साल की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है. प्लेज नहीं है, प्रोमोटर्स ने 1.30% खरीदा है अभी, सो दैट्स अ गुड एस्पेक्ट. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ठीक ठाक है. व्हाट इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग हियर इज दिस फिगर, फ्री कैश फ्लो, that's 110 crore. Now, free cash flow generally I prefer to have in positive, right? Free cash flow agar positive nahi hai, so what can happen there, right? That means either they are using this cash what company may be generating, or the company may not be generating the cash. अगर जनरेट कर रही है तो शायद डेट टू इक्विटी, डेट को सर्व करने में लग रहा है पैसा, एक्सपेंशन में लग रहा है, तो यू विल हैव टू चेक फर्दर वेदर द कंपनी इज इन एक्सपेंशन मोड, कुछ नया कर रही है क्या. तो नया अगर कुछ कर रही है तो यस, जो कैश जनरेट हो रहा होगा वो यूज हो जा रहा होगा, वो भी आपको स्टडी करना जरूरी है यहाँ पे, राइट. अगर हम चार्ट के पर्सपेक्टिव से बात करें, सो इट हैज सीन अ हाई एंड इट हैज पोस्ट कोविड इट हैज सीन अनदर हाई, बट ये मोर और लेस कोविड के, प्री कोविड के टाइम पे वापस से आ गया है, राइट. और उससे भी एक्चुअली ये नीचे चला गया. सो देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट रियली हैपनिंग ग्रेट हियर, otherwise the company should be doing well. If you look at this, it's a pattern of head and shoulder, but इस head and shoulder pattern को अगर complete होना है तो the price has to go below 200, 180 के आसपास में. अगर वहां पे जाके ये ब्रेकर डाउन देता है नीचे की तरफ, तो price will further fall, technically speaking. But if it reverses from there, then you can think of taking a position, and your first target will be around 400, second will be 500, and your third target will be around 650. Now that could be possible only when the market turns around and this company alters its free cash flow. The large investors, the institutional investors will not get into this company as it is making a negative free cash flow, friend. Retailers don't have so much of power to pull the company price too much up. Let's look at the shareholding patterns here. FIs 5% थे, 1% रह गए, DI 6% थे, 0 हो गए. मतलब FIs और DIs का पत्ता गुल. 25% पब्लिक थी, 36% होगी, तो जो इन्होंने बेचा 11%, ये भाई लोग ने खरीद लिया. और आपको पता है जहां पे भाई लोग आ जाते हैं वहां से अपन पतली गली से कट लेते हैं, क्योंकि भाई लोग में इतना दम है नहीं रिटेलर में कि ये प्राइस को सस्टेन करके और ऊपर खींच पाए. यू कैन सी द चार्ट इज स्पीकिंग वॉल्यूम्स हियर इटसेल्फ. लास्ट 2-3 क्वार्टर में जो प्राइस की धुलाई हुई है यहाँ पे, राइट. तो ये धुलाई की है FIs और DIs ने, और उसको रिटेल वाला कब तक संभालने वाला है. जब भी स्पेशली इम्पैक्ट, ये जो नेगेटिव कैश फ्लो, इसका इम्पैक्ट रिटेलर को दिखेगा, तब उनको भी यहाँ से भागना पड़ेगा, तब प्राइस ऊपर जाएगी नहीं. सो मेरे ख्याल से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड पर्सनली अवॉइड इट. रेस्ट यू हैव चॉइस ऑफ योर्स, यू आर द बॉस ऑफ योर ओन मनी, राइट. सो टेक केयर एंड टेक अ कैलकुलेटिव रिस्क. अगर लेना भी है तो भी स्टैगर्ड मैनर में कम क्वांटिटी लें. कैन वी ट्रेड, माइल का सवाल है, कैन वी ट्रेड आहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर स्विंग हाई एज इट गॉट ऑर्डर वर्थ 504 करोड़. ओके जी, जरा देखते हैं आपका आहलूवालिया. दे आर बिग civil contractors, right? Even in Mumbai they have a lot of projects. So 2 times of the book value trade कर रही है. स्मॉल कैप है, ROC ROE ठीक ठाक है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी कम है. डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, विच इज अ गुड एस्पेक्ट. सेल्स ग्रोथ 2 डिजिट में है, 5 साल का, 10 साल का. सेल्स ग्रोथ सिंगल डिजिट में है, while its profit growth is in 2 digits. Promoters are holding decent amount of 55.3%. There is a pledge of 26.4%.
दैट्स मैटर ऑफ कंसर्न। अगर आप फेयर वैल्यू के पर्सपेक्टिव से बात करोगे तो अराउंड 400 की फेयर वैल्यू है, विच इज इट्स ट्रेडिंग एट दैट एस्पेक्ट ऑफ, सो दैट व्हाट इट इन फ्री कैश फ्लो अच्छा 456 करोड़ का कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए, this kind of free cash flow is always advisable. If you look at the chart, you would see this company is being supported about 200 days moving average consistently post COVID lockdown, right? अब लेकिन ये इसके नीचे चला गया है, right? देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये इसके नीचे बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाता, ये टाइम छोड़ दो कोविड टाइम बिकॉज एक्टिविटीज बंद हो गई थी, बट उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये जो इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज है, लेट्स सी हाउ मच इज द डिफरेंस व्हिच वी कैन सी। द मैक्सिमम डिफरेंस इज लेट्स से 272 टू okay 37 this side and around 28 that side, so 50 पॉइंट नीचे तक ये यहाँ से जाता है, राइट? अभी अगर ये पॉइंट पे अगर आप देखोगे 392 पे प्राइस है और 200 डेज 411 पे है, 17 जून की प्राइस है, राइट? 392, that means it is below 411, that's a 200 day moving average. So on an average if it falls further, so 50 point down karo, so 360, so what you can do possibly it around 360 350 के आसपास में इसमें staggered manner में buying चालू कर सकते हैं। And what would be your target? Definitely the next swing high, but before that 442, which is a current 50 moving period, that will be your second resistance, and your first resistance will be 411, which is a 200 days moving average. ये तोड़ने के बाद में फिर वो swing high which is at around 520 के आसपास में ये वहां मूव कर सकता है. So that way if you understand the technicalities of it and staggered buying, you can do that, or you can place orders in Sherkhan platform, which is Trade Tiger, that gives you a lot of flexibility to keep on buying at lower prices in quantity you want, and on the dates you can give the validity of those dates until which the buying can happen. ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से आप अपनी buying कर सकते हो, right? So let me share the next question. The next question comes from Suraj Jaiswal. Long-term view container corporation. Container corporation. Container corporation. Once upon a time, I used to be invested. Right, and in between, the government was also trying to, dilute their stake in this. Right, again, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी है, सो आरओसी आरओई बहुत बढ़िया नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे. 10 का आरओई है, 13 का आरओसी है. स्टॉक की पी ऑलमोस्ट 35 की वाली इंडस्ट्री की 18.5 है, सो ऑलरेडी 2 टाइम्स एक्सपेंसिव है ये. 177 का स्टॉक है 610 में, सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव भी आप देखोगे इतनी गिरी हुई मार्केट में ये स्टिल अराउंड 4.5 टाइम्स कमांड कर रहा है प्रीमियम, राइट? So again, not a good investment at this price. किस कारण से इसकी प्राइस में सडन राइज हुआ होगा, इट इज वेल अंडरस्टूड, राइट? जब भी लॉकडाउन होते हैं, या आप बोलो लॉजिस्टिक की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो लॉजिस्टिक्स में जो भी कंपनीज इन्वॉल्व हैं उन सब की वैल्यू बढ़ेगी. This is what has happened here. The good part is they have got a free cash flow, but only 1% dividend yield at this price. Fair value से almost 2 times करीब ये trade कर रहा है. So I would personally not be investing in this. ठीक. Let's look at the chart. If you see, कोरोना टाइम पे ये स्टॉक बहुत बुरी तरीके से गिरा था फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि सप्लाईज ही बंद हो गई थी,
ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गए थे, तो ये कंपनी पैसा कैसे बनाएगी? बट उसके बाद में ये इसने जो जंप दिखाई है अपसाइड में, दैट वाज रिमार्केबल. एंड now if you see, it is already have a, I think gold, this is showing death cross over here, right? 200 days के moving average के, but 50 and 200 days के moving averages बहुत close में चल रहे हैं यहाँ पे. That means जो भी ये trend है, ये बड़ा कमजोर trend है. That means it might keep on swinging from 570 to 700. So it could be a good swing trade. किस प्राइस पे? If it makes a double bottom at 575 or so and shows the sign of reversal, तो कैंडलस्टिक पैटर्न में आप देखें, अगर आपको यहाँ पे रिवर्सल मिले तो उसके बाद में आप डेफिनेटली एक 630 के लिए 630 to 635 के टारगेट के लिए पहला ट्रेड ले सकते हैं, और सेकंड टारगेट विल डेफिनेटली बी 700. सो दोस कुड बी अ स्विंग ट्रेड. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी महंगा है, एंड जनरली लॉन्ग टर्म के लिए मैं अंडरवैल्यूड स्टॉक खरीदना प्रेफर करता हूँ. Right, Suraj, hope your question is answered. Joseph D'Souza Kaswala, fundamentals of Vardhaman Textile Limited seems to be good for investment. What is your view? Vardhaman ka definitely fundamentals are good. I've been invested for almost 4 years, but I've exited at the peak, booked my profit, because now I believe ये सेक्टर में उतना दम नहीं रह गया. जिस सेक्टर ने जितना भागना था ये भाग लिया, और जिसने प्रॉफिट बुक करना था वहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया. सो इट्स ट्रेडिंग बिलो इट्स अ बुक वैल्यू. इफ आई शेयर द fundamentals of with you, right? Hold on a minute, let me do that part. So that way book value के वैल्यू पे मिल रहा है आपको डेफिनेटली गुड स्टॉक. पी अगर आप देखेंगे 4.78, अगेन आप 5.8 कंपैरिजन विद 4.8 सस्ता मिल रहा है पी के पर्सपेक्टिव से. फ्री कैश फ्लो 427 करोड़ का है, व्हिच इज गुड. अगर आप पीईजी देखेंगे वो भी कम है. प्रोमोटर्स ने यहाँ पे 0.22% अपना शेयर बेचा है, सो दैट इज नॉट गुड, ऑल्दो दे आर होल्डिंग सब्सटेंशियल शेयर्स. ऑलमोस्ट 63% होल्ड कर रहे हैं, राइट? सेल्स ग्रोथ 5 साल की, प्रॉफिट ग्रोथ क्लोज टू 2 डिजिट है, व्हिच इज गुड. 10 साल की सेल्स ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं, बट प्रॉफिट ग्रोथ इनकी भयंकर है, राइट? 28% 10 साल की प्रॉफिट ग्रोथ. दैट मेक्स अ ह्यूज स्टेटमेंट, राइट? एंड अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो हाल फिलहाल में काफी भागा है ये चार्ट, और इनको ये शेयर करीब यहाँ पे स्प्लिट करना पड़ा था. when it was already 3,000 के आसपास में पहुंच गया था, तो लिक्विडिटी बढ़ी, उसके लिए इन्होंने स्प्लिट किया. और फॉल एक नेचुरल होता है स्प्लिट में, क्योंकि जब शेयर की वैल्यू 1/5 हो गई तो शेयर की प्राइस को एडजस्ट होने के लिए वो जरूरी है उसमें, राइट? एंड यहाँ पे डेथ क्रॉस बनाया. अभी जिस लेवल पे आया ना, ये प्री कोविड लेवल पे आया करीब, राइट? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2018 की प्राइस पे आया है. आई हैड इन्वेस्टेड आई थिंक 2017 के आसपास में, 16 में मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी, एंड आई सॉ द डाउन साइड एट द टाइम ऑफ कोविड, एंड वापस ये वही लेवल पे आया. सो इफ यू हैव अ लॉन्ग पीरियड of holding possible for you, you can start buying in a staggered manner. On every fall you can buy it. However, remember that textile sector is a cyclical sector, so for years it goes in down cycle. अगर आप अभी थोड़ी देर पहले मैं जो बात कर रहा था, आप देखो यहाँ पे इसका 2018 में डाउन साइकिल चालू हुआ, और 2018 की वो प्राइस में पहुंचते इसको 2021 जुलाई लगा. सो ऑलमोस्ट 3 साल की ये साइकिल थी, और ऐसे ही 3 साल देखो यहाँ से ये अप चला है, राइट? जब ये अगर अपसाइड इसकी देखेंगे वापस, अगर ये जुलाई 2020 से वापस ये करीब अप्रैल 20, सो वी कैन से रफली 2 साल ये अप ट्रेंड में रहा, और उसके बाद में अब डाउन ट्रेंड में रहेगा. तो जिस हिसाब से फॉल आई है, वो फॉल सिर्फ डाउन ट्रेंड की फॉल नहीं है, ये स्टॉक स्प्लिट होने की फॉल है, राइट? तो इसको वैसे कंसीडर ना करें, लेकिन अगर ये डाउन साइड में जाएगा तो काफी टाइम तक फिर डाउन साइड में ही रह सकते हैं. इसके लिए होल्डिंग पीरियड चाहिए. तो छोटी क्वांटिटी में खरीद के आप इसको
वीकली बेसिस पे मॉनिटर करें और देखें कब रिवर्सल होता है। जब भी रिवर्सल हो तब लेने में फायदा है, अदरवाइज मनी गेट्स स्टक अप फॉर इयर्स अनलेस अंटिल यू हैव गॉट एम्पल ऑफ मनी। You should be taking it with a with a pinch of salt, right? Okay, there is a one interesting question Sonia Shah ji ka, right? Um, that's about Hinduja Global. So Hinduja Global is an IT company which I also had not been following, but last few weeks I've started following this company. ग्लोबल, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी मैंने इसके फंडामेंटल में कि इसका डिविडेंड 12% का है। अमंग आईटी कंपनीज आई हैवंट सीन एनी कंपनी ऑफरिंग 12% का डिविडेंड यील्ड। नाउ इफ यू लुक एट द बुक वैल्यू ऑफ दिस कंपनी 1868 एंड ये हाफ द बुक वैल्यू में मिल रही है। अगेन क्वाइट सरप्राइज, राइट? इफ यू लुक एट आरओसी एंड आरओई मोर देन 100, तो सोने पे सुहागा है। If you look at stock P 0.65, इंडस्ट्री का 26, so अगर मैं ऐसे बात करूंगा तो it's a 52 times undervalued at this point of time. फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव में है, although बहुत ज्यादा नहीं, स्मॉल कैप स्मॉल कैप कंपनी है, 3963 करोड़ की। So now you'll have to see from sales perspective, sales growth 5 साल में 2.5% माइनस थी, but 103% की प्रॉफिट ग्रोथ थी। 10 साल में 7.7% की सेल्स ग्रोथ है, बट प्रॉफिट 50% का है। सो दैट इज अगेन a good aspect of it. Now it belongs to Hinduja Group, right? So Hinduja Group is a UK based group. अशोक लेलैंड इनका है, इंडसइंड बैंक इनका है, और भी कई सेक्टर्स में हिंदुजा ब्रदर्स आर वर्किंग एंड दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन यूके। रिस्पेक्टफुल नाम है, तो मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ रेड मार्क नहीं दिखाई देता है। फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से काफी अंडर वैल्यूड कंपनी है। सो आई स्टार्टेड जस्ट फॉलोइंग इट फॉर लास्ट फ्यू वीक्स एंड थोड़ा थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में मैं इसमें पोजीशन बनाना चालू करा, नॉट टू मच बिकॉज अभी भी लॉट ऑफ स्टडी हैज टू बी डन। इफ यू सी इस कंपनी में कॉन्सिक्वेंसेस काफी कम दिखाई दे रहे हैं, प्रोज इसके फेवर में बहुत ज्यादा है। कंपैरिजन में क्या है, टाटा एलेक्सी, एम्फेसिस, एलएनटी टेक्नोलॉजीज, ये सब कंपनीज के हिसाब से देखेंगे आप तो ये मतलब बहुत सस्ती मिल रही है आपको ये कंपनी, बहुत सस्ती, बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको उस हिसाब से। Now let's look at there are of course other factors due to the time constraint we may not be going into it, but अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न से देखें तो promoters have been holding 67.31% and more or less उतना ही है, तो promoter ने कुछ बेचा नहीं अपना स्टेक, राइट? नाउ एफआईज को देखें तो 11% में थे, वहां से 5% बेच के निकल गए 6%। डीआईज 0.29% थे एंड मोर और लेस हाफ स्टेक उन्होंने बेच दिया। एफआईज 21.5% थे, वहां से ये 26 मतलब 5% एफआई ये पब्लिक ने खरीदा है ना। ये 5% पिछले कुछ सालों में किसने खरीदा? सीता कुमारी ने, आई डू नॉट नो। रिलायंस वैल्यू सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, आई डोंट नो वेदर इट इज अ मुकेश भाई's रिलायंस और रिलायंस कैन बी एनीबॉडीज कंपनीज नेम, राइट? तो ये यहाँ पे एक देखने की चीज है। सो एफआईज निकल रहे हैं यहाँ से, एफआईज निकल रहे हैं बिकॉज एफआईज को निकलना है मार्केट से, या स्टेक कब कर, एक्सक्यूज मी, promoter they are very clear, all Hinduja group, Ashok Hinduja, हर्षा अशोक, सब वही है, ठीक है। एफपीएच भी है इसमें, एमएस मॉरिशस, ये इनका ही कंपनी होगी जो कि होल्डिंग कंपनी है। सो फंडामेंटली इट साउंड्स टू बी ओके टू मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो स्मॉलर स्टैगर्ड मैनर में आप खरीद सकते हैं। नीचे गिरने का कारण आपको क्लियरली समझ गया, एफआईज बेच रहे हैं, डीआईज ने इसमें स्टेक बनाया ही नहीं है, तो प्राइस होल्ड कैसे होगी? मतलब देखो, प्रमोटर अपनी जो पोजीशन है उसको मेंटेन करके बैठा हुआ है, राइट? मार्केट में अगर स्टॉक की सप्लाई एफआईज ने बढ़ा दी है और ये मेगा स्टॉक हुआ करता था, राइट? अभी तो फिर भी सस्ता हो गया, तो रिटेलर कितना खरीदेगा इसको? अगर मार्केट में खरीदार कम होंगे, ऑब्वियसली
सप्लाई बढ़ जाएगी शेयर की, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगी। सो थोड़ा क्वांटिटी में लिया जा सकता है इसको। सुनिए, चिन्मयी जी का सवाल है, योर व्यू ऑन पनामा पेट्रोकेम लिमिटेड। ओके, पनामा पेट्रोकेमिकल, लेट्स सी पनामा पेट्रोकेमिकल। अगर आपको ये ट्रेड पर्सपेक्टिव से देखना है, सो 2.2 टाइम्स अपने बुक वैल्यू के ट्रेड कर रहा है। आरओसी आरओई ठीक ठाक है, स्टॉक पी ठीक ठाक है। अगर बाकी के पैरामीटर देखें ठीक ठाक लगता है, प्लेज नहीं है, प्रमोटर्स आर होल्डिंग 71%, डेट नहीं है, स्प्लिट हो चुका है कई बार, डिविडेंड कुछ खास देता नहीं है, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, 5 साल की भी 10 साल की दोनों दो इसमें है। अगर फेयर वैल्यू पर्सपेक्टिव से देखोगे तो मल्टीपल वेज है फेयर वैल्यू निकालने के, 400-500 की फेयर वैल्यू, सो फेयर वैल्यू से हाफ में ये ट्रेड कर रहा है एज ऑफ नाउ, राइट। अगर हम चार्ट के पर्सपेक्टिव से बात करें, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, तो ऑल टाइम हाई इसने 259 का यहाँ पे तोड़ा था और ऑल टाइम हाई के आसपास में ट्रेड कर रहा है। लेट्स सी द व्हाट इज द business of manufacturing and exporting various kinds of petroleum specialties. Manufactures of white oils, petroleum jellies, transformer oil, inks and coating oils, rubber processing oils, knitting oils, anti-static, coning oils, industrial oils, lubricants, drilling. So it's a completely special chemical, right? So इसका जो प्रमोटर है वो देखें, who are the promoters, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, फिर उसके बाद में और एक्सप्लोर करना चालू करें। तो प्रमोटर्स ने 2019 के बाद में यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है करीब 1.5%। एफआईज 1% थे, एफआईज ने बढ़ाया है। अगर आप देखोगे तो कुछ ड्यूरिंग द सेल आउट एफआईज आर नॉट सेलिंग इट। डीआईज वर 0.06% और मोर और लेस वहीं पे हैं। पब्लिक डटी हुई है 29% से, पब्लिक ने थोड़ा फार फिर भी यहाँ पे बेचा है। अगेन एफआईज डीआईज का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। सो रेस्ट इसकी सेल्स ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ वगैरह आप यहाँ पे ज्यादा जो डेटा है ना वो चेक करें अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना। बट प्राइस स्टेबिलिटी के हिसाब से आई थिंक द डाउन साइड इज हियर एट 266 वाले इज टू एट 284। तो 266 या 265 के आसपास में आता है तो यू कैन टेक अ पोजीशन हियर and then think of your 325 350 is your target. Downside काफी कम दिख रही है, स्पेशलिटी केमिकल है और स्पेशलिटी केमिकल में जो इनके जो इनपुट्स हैं बाहर से आते हैं बहुत सारे इनपुट्स, और अगर वो महंगे होंगे बाहर से आने वाले इनपुट, उनकी सप्लाईज का इश्यूज होएगा तो सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं दूसरी जगहों पे भी होगा, और ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो इफ दे आर गेटिंग एनी ऑल्टरनेटिव source for the products which are input for them, which may be mostly the petroleum products, byproduct, they might be buying those products from Reliance, क्योंकि Reliance बहुत सारे petroleum byproducts बनाता है। So Reliance की जो ऑयल की सप्लाई है वो भी अभी अच्छे सस्ते दामों पे है, they are importing from रशिया। सो शायद इनपुट की कॉस्ट नहीं बढ़ी है, अगर ऐसा हुआ है तो पॉसिबली इसकी प्राइस और ऊपर जा सकती है क्योंकि इसकी भी इनपुट कॉस्ट नहीं बढ़ी हुई होगी, वाले एक्सपोर्ट में ये प्राइस बढ़ाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लेट मी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अमूल्य प्रधान का, आई हैव इन्वेस्टेड इन मैथन अलॉयज लिमिटेड, नाउ इट्स गोइंग डाउन एंड डाउन, should I hold or book loss? How's your fundamental? Okay, so Mythen alloys fundamentally no issues at all. ठीक है, if you have been following us for a few years, you might be knowing around 4 years back we invested in this company, and when the all-time high was around 1600 के आसपास में पहुंचा था, we booked all the profit. For last 4-5 sessions, if you are following stock market के बाद MJ के साथ, I've been telling you जो स्टील का या मेटल का साइकिल है, it looks like that has now matured. Metal is a cyclical sector, and cyclical sector, for a few years they will be in down and then they will suddenly go up and give you good profit.
that's the time you should be exiting. But generally retailer के साथ में प्रॉब्लम ये है कि जब मार्केट प्राइस ऊपर चली जाती तब उनके नोटिस में आता है, वो महंगा खरीदते हैं. Ideally you should have booked your profit if you are invested in at around 1550 के आसपास में. अगर नहीं किया, if you are still in profit, you can book the profit, क्योंकि यहाँ पे कोई डिविडेंड बहुत खास नहीं है, राइट. फंडामेंटल्स आर गुड, बुक वैल्यू के आसपास में ट्रेड कर रहा है. बट अगर साइकिल अगले 2 साल डाउन साइड में चलेगी तो आप क्या करेंगे? सो द चॉइस इज योर्स. If you can hold it for a longer period of time, it will come back to its a fair value, and fair value roughly 3000 की है इसकी, 3000 प्लस की fair value है. So that way is good, but holding capacity होनी चाहिए. If it is in a small quantity and you can withstand that, ये लाल रंग, तो आपको वो गाना नहीं गाना है कि ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा. तो रही है वो लाल रंग के साथ में, साल 2 साल में वापस से ये 1500 1600 1700 के आसपास में आई, तो फिर उस समय हरे रंग के साथ में इसको बेच दीजिएगा, राइट. Power trading company. Power trading companies are doing very well, Nilesh. If you're talking about sector, if you are power trading companies या power trading exchanges, they are doing well. If you are having anything in particular, if you are talking about PTC, तो उसको देखते हैं. पावर ट्रेडिंग बिजनेस बड़े जोर शोर में है. तो यहाँ तो पावर का दिख नहीं रहा भाई. पावर फाइनेंस, पावर ट्रेडिंग है क्या यहाँ पे? आप सेक्टर की बात कर रहे हो क्या? सो इज क्वाइट फाइन. मतलब पावर सेक्टर के जो कंपनीज हैं, irrespective of, there is a लॉकडाउन के टाइम पे थोड़ा कंजम्पशन कम होएगा, बट मोर और लेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी के प्रोजेक्ट्स वो चलते रहेंगे. इट्स अ गुड सेक्टर. Energy sector itself is a good sector, evergreen sector. In almost all countries, energy sector is doing well. Okay, good. If you are invested in अच्छे सेक्टर में इन्वेस्टेड हो. पार्थी पाटिल कहते हैं कि सर बगेरिया इंडस्ट्रीज प्लीज. बगेरिया इंडस्ट्रीज, बहुत सालों के बाद में आप मुझे बगेरिया इंडस्ट्रीज को एनालाइज करा रहे हो. लेट मी सी हाउ दिस. मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग ऑफ डाइज एंड डाई केमिकल्स, 1.5 times पे नहीं, नॉट 1.5 times, इनफैक्ट 1.5 times बोल सकते हो. 1.75 times ट्रेड कर रहा है. ये ठीक ठाक है. आरओसी आरओई ठीक ठाक है. क्या ये नया स्क्रीन चालू हुआ? डिविडेंड 2% का, नॉट बैड. डेट बहुत कम है, गुड. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है. सेल्स डिजिट 5 साल की, प्रॉफिट डिजिट 2 डिजिट में है. 10 साल की एक्सेलेंट है, 25% 65%. प्रोमोटर होल्डिंग इज वेरी गुड, नो प्लेज. प्रोमोटर ने थोड़ा और खरीदा है. अगर फेयर वैल्यू देखेंगे तो फेयर वैल्यू 200 250 के आसपास की इसकी फेयर वैल्यू है. साउंड्स टू बी लिटिल अंडरवैल्यूड एज ऑफ नाउ. फ्री कैश फ्लो भी अच्छा है. सो फंडामेंटल्स यहाँ पे ठीक ठाक दिख रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन गिरते हुए मार्केट में फंडामेंटल्स अच्छे हों बुरे हों सब पिटते हैं. हाँ, फंडामेंटल जिनके खराब होते हैं वो ज्यादा पिटते हैं, फंडामेंटल जिनके अच्छे होते हैं वो कम पिटते हैं, बट पिटते सब है, राइट. तो यही यहाँ पे हो रहा है. अच्छे सपोर्ट लेवल पे जाके ये बैठा हुआ है. 150 तक इसमें आप बिंदास पोजीशन बनाते रहो, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए. जिस हिसाब से प्राइस गिर रही है, ऐसे लगता है कि थोड़ा और गिरेगी यहाँ पे, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई इश्यूज नहीं है. नाउ लेट अस सी क्यों गिर रही है प्राइस. वो हमारे यहाँ पे जो बड़े भाई लोग हैं ना, वो बता देंगे आपको. प्रोमोटर 70% 71% उन्होंने बढ़ाया है. एफआईज न थे न हैं. और पब्लिक 29.33%, 28%. अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा गेम हो रहा है, जो मैं हर बार आप लोग को बोलता हूँ ना यहाँ पे कि जहाँ पे पब्लिक होती मैं वहां नहीं रहता हूँ. उसका कारण है पब्लिक बेच रही है, पब्लिक, और प्रोमोटर खरीद रहा है. प्रोमोटर बढ़ा रहा है अपने शेयर को. किससे? पब्लिक से. प्रोमोटर कभी भी जब भी खरीदेगा कम प्राइस पे खरीदेगा. बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर, कल मैं डेटा देख रहा था स्टॉक मार्केट का, जो बल्क डील्स होती हैं. कल विजय शर्मा, आई एम श्योर यू नो दैट ही इज अ प्रोमोटर ऑफ पेटीएम. उन्होंने शेयर बेचा आईपीओ में 2150 रुपीज में, और अभी उन्होंने करीब 18 करोड़ के शेयर खरीदे हैं फ्राइडे को, थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन में मिला के, विच इज आई थिंक 650 625 के आसपास की प्राइस में खरीदे. So that's what smart people do, that's what promoter do. प्राइस गिरती है
तो वो खरीदते हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हेन द प्राइस इज गोइंग डाउन, डीआईज एफआईज तो खरीदने में यहाँ इंटरेस्टेड है नहीं, खरीदने में सिर्फ प्रोमोटर है। प्रोमोटर सिर्फ उतना ही खरीदेगा जिससे कि प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए, क्योंकि उसको और खरीदना हो सकता है। कब तक खरीद सकता है वो? 75% तक वो खरीद सकता है एज अ प्रोमोटर, और रिश्तेदारों से भी तो खरीदवा सकता है ना। सो इट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रोमोटर, शेयर की प्राइस नीचे जाए और वो ज्यादा से ज्यादा खरीद पाए। तो ये वैल्यू होगी 150 के आसपास में, अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा, आप भी खरीदना चालू कर सकते हैं। फंडामेंटली ठीक ठाक लग रहा है। अंश मेहता का सवाल है, बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया नेक्स्ट 3 मंथ्स। सो नेक्स्ट 3 मंथ इन्वेस्टमेंट 3 महीने का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है अंश, इट इज मोर ऑफ अ स्विंग ट्रेडिंग, राइट। सो फंडामेंटल के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक दिखता फंडामेंटल्स, कोई ऐसा खराब नहीं दिखता है। इंडस्ट्री के पी से सस्ते में मिल रहा है, फेयर वैल्यू 250 रुपए के आसपास की है इसकी, फ्री कैश फ्लो अच्छा है, इसमें कोई इश्यू नहीं दिखता है। क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके? बैंकों के, मेहुल के पटेल इसके प्रमोटर हैं, एंड वो डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट में इंजन कूलिंग मॉड्यूल्स एंड सिस्टम्स, ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। सो अच्छा सेक्टर है, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप चार्ट के हिसाब से 10 साल का चार्ट देखेंगे तो वापस ये भी गुड। इसमें अच्छी चीज है कि द प्राइस इज ट्रेडिंग अबाउट 200 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज। ऑल्दो यहाँ पे डेथ क्रॉस हुआ है, यहाँ पे इसने अच्छे से सपोर्ट लिया है ये जोन में। साउंड्स टू बी इंटरेस्टिंग। आई विल कंफर्म व्हाट टू डू आफ्टर। प्रोमोटर्स होल्डिंग पैटर्न्स क्या है यहाँ पे 212 के लिए, अदरवाइज यहाँ पे पोजीशन ठीक ठाक लग रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कैसे हैं? एफआईज 0.83 निकल गए, डीआईज निकल गए, पब्लिक 27 से 31 पर, तो वापस यहाँ पर भी वही गेम चल रहा है जो बगेरिया में चल रहा था, राइट। सो मोर और लेस पब्लिक है और प्रमोटर है, तो प्राइस मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं दिखेगी। इसको और ऊपर जाने के लिए डिमांड चाहिए, डिमांड के लिए एफआईज और डीआईज को खरीदना चाहिए। दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस स्टॉक। तो अगर आप 3 महीने के लिए लोगे, 3 महीने के लिए प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे झूलेगा। आपको अगर लेट्स से 160 में लिया, आपको 250 250 के आसपास में जाके 200 से 250 के आसपास में जाके ये वापस डाउन ट्रेंड ले। इफ यू आर फास्टर स्मार्टर यू कैन बुक योर प्रॉफिट, देन यू कैन टेक द पोजीशन। अदरवाइज गिरते हुए मार्केट में थोड़ा संभाल के चले। Kalyani Steel is available below book now. It's the right time to invest. See, Kalyani Steel is a specialty steel, but most of the time people consider it as a Tata Steel competitor or that type of company. Fundamentally, Kalyani Steel I've been following for last 7-8 years. Fundamentally always good, fair value इसकी हमेशा अच्छी होती है, but it does not get its due value in the market, as most of जो FIs हैं, DIs हैं, they don't chase this specialty chemical company. बाबा कल्याणी ग्रुप की कंपनी है, भारत फोर्ज इनकी कंपनी है, कल्याणी इन्वेस्टमेंट इनके, बहुत सारे कंपनीज हैं इनके जो कि स्पेशलिटी में है, राइट। अभी अगर भारत फोर्ज की बात करेंगे, दे आर मेकिंग स्पेशल forged products for defense sector, lot many things, but again Bharat Forge is also not getting the kind of valuation it can get. Similarly Kalyani Steel के साथ में भी यही challenge आता है। Otherwise fundamentally there is no issue, fair value wise there is no issue. If you look at the chart, it's seen the double top here. This was the time steel sector peaked out, right? उसके बाद में ये तभी से डाउन सेक्टर में चल रही, क्योंकि स्टील का सेक्टर ही वैसे चल रहा है। Now what you can do is जो प्री कोविड का इसका लेवल है ना 255 का, वहां पे अगर आता है तो आप अक्यूमुलेट करिए और होल्ड करके बैठ जाइए। अर्लियर इट यूज्ड टू पे 2% डिविडेंड, अभी भी ये प्राइस पे 2.73 डिविडेंड देती है। 250 के प्राइस पे इट माइट बी 3% 3.25% डिविडेंड होगा, which is more or less आपके बैंक के एफडीज के बराबर होता है। So that way you can hold it, don't need to book the losses if you are already invested. और
नया इन्वेस्टमेंट अभी इस पे मत करें, क्योंकि अगर मार्केट नीचे जा रही है ये भी नीचे जाएगा। 250 से नीचे इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप डेफिनेटली कर सकते हैं, राइट। जानवी जी का सवाल है भाई, आरईसी फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड व्हेन मार्केट वाज बुलिश। सो आरईसी ये एक पहले ना हीरो होंडा का मोटरसाइकिल का एक ऐड आया करता था, फिल इट एंड फॉरगेट इट, राइट। तो ये वही है आरईसी आपका। आरईसी आपने ले लिया, उसके बाद में भूल जाएं। आपको 10-12% 11.3% का डिविडेंड देता, फंडामेंटली कोई इश्यू नहीं है। सरकारी कंपनी है, धीरे धीरे ग्रो करती है, डिविडेंड देती है, डिविडेंड का मजा लें, कितने साल भी इन्वेस्टेड रहें, जब भी 150, 160, 170 के प्राइस पे आता है बेच के निकल जाए, प्रॉफिट ले लें थोड़ा बहुत, राइट। इफ यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड, नथिंग टू वरी अबाउट दिस प्रोडक्ट, right? So friends, I think a lot of your questions have been answered. A lot of questions might have been left out. What you can do is, we're running short of time. You can post your questions in our social media. One platform is, Praj Systematic Traders and Investors. Another platform is your YouTube, right? तो YouTube में community tab होता है, या ये आज की जो वीडियो होगी वहाँ पे रहेगी, उस वीडियो में आप अपने क्वेश्चंस लिख दें। विद इन अ वीक्स पीरियड यू विल फाइंड योर आंसर्स हैव बीन गिवन देयर विद अ टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। Either way, you can reach us. You can also reach us on telephone on 932-111-2020 and send WhatsApp. Don't call on that number. People will not be picking up the call. They will reply to you on your WhatsApp. यहाँ पे प्राइस सिस्टमैटिक ट्रेडर में भी आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ our students as well as our community, trading and investing community, जहाँ पे हम हमारे views and हमारे analysis share करते हैं। You can definitely take advantage of it. Friends, don't forget to like this video and share this video with your friends and family members who can be immensely benefited with the quality knowledge and analysis. All right, so see you next Saturday, same time, stock market के बाद MJ के साथ. Until then, have a wonderful weekend. Stay safe.